Hello, good morning everyone. Welcome to Odisha Civil Academy. जेमती जानछन कि प्रीलिम्स पाखे आसलानी समस्तंकर के हार्ट बीट टिके बहुत माने बढ़ी जाइथिबो राइट बट आई वुड लाइक टू से कि बिल्कुल डरिवार नहीं ओके मन रख जिते काम रहइबो थिंग्स विल बी बेटर यू विल परफॉर्म बेटर राइट सो आजिर स्पेसिफिक टॉपिक जदि हम कहबी कि इट इज योर गवर्नमेंट स्कीम्स इंपोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स ऊपर आज हम डिस्कस करियो मेनली just a minute. Just a few seconds. Just one second. Okay. Important government schemes. Important government schemes. बहुत सारा रहिबो. This is the only first class means regarding the government schemes that covers only the central government, right? India central government. बर्तमान आज हम deal करियो central government रो first, right? So later. Good morning everyone. Good morning. I hope everyone doing well. Okay, so start करिवा central government schemes basically जदि हम देखिया कि central government schemes they have got specific advantage in the questions जदि हम देखिवा हमर questions रे regular basis रे प्राय central government schemes ऊपर पचारते regular कौन it is a mandatory question so one should expect more questions regarding your central government schemes ऊपर right central government schemes ऊपर हम देखि परिबा वर्तमान जानिबा प्रथमे किछ ना इंपोर्टेंट जोडा कि गवर्नमेंट रो प्राइम फोकस जदि हमें देखिबा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हमरो कि जदि हमें इट इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल ओके इंटरनेशनल संगरे हमर केमति रहि छै एंड ऑल ओवर द फॉर द सोशल वेलफेयर एंड द बेनिफिट्स ऑफ द लार्ज मासेस ऑफ आवर कंट्री राइट सो वर्तमान देखिया फर्स्ट हमें देखिबा प्रणाम गुड मॉर्निंग गॉड ब्लेस यू हाउ आर यू गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फर्स्ट हमें देखिबा समस्त खाता पेन धरिकी भी बस खाता पेन धरिकी बस इट विल आल्सो बेटर तुम मन को भी आउरी बुझा पड़ियो हला बहुत सारा इथरे की प्रीलिम्स रे हेल्प्स हबो डेफिनेटली 100% डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर प्रीलिम्स आल्सो एनालिसिस रे मेंस रे तुमको बहुत हेल्प हबो ओके दिस आर द वेरी करंट टॉपिक एंड इंपोर्टेंट पार्ट जदि हमें देखिबा कि जीएस रे गोटे पार्ट सो सूर्य घर प्रथम में देखिबा सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना राइट सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गोटे जदि हम देखिबा गोटे फ्लैगशिप प्रोग्राम एंड ही हैज गॉट वेरी विजनरी वर्तमान इंडिया पई जदि हम देखिबा कि बहुत सारा इंपोर्टेंट ए जो टॉपिक्स हम डिस्कस करबा खास करके आज मोर रहइबो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऊपर सो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एज वी नो दैट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स केते इंपोर्टेंट वर्तमान इंडिया पई बिकॉज़ इंडिया हैज कमिटेड in COP26 कमिट हम आस्तिले एंड आल्सो एवरी ईयर कंसेक्यूटिवली इन एवरी ईयर ओके सक्सेसिव इयर्स रे कि कंसेक्यूटिव जहां भी हम कहि परि हम कमिट करि आछुंदी कि वी हैव टू स्विच ओवर आवर डिपेंडेंसी एनर्जी डिपेंडेंसी फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स टू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस तो वर्तमान आगु देखिबा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर प्रथम में पढिबा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तमे कोन देखिछो सूर्य घर दिस आर द पोलर सेल्स हला वोल्टेज सेल आपरे हला सब वर्तमान जदि देखियो हमें देखियो जदि सोलर पावर ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस पचारछन इन ईदर वे राइट आइदर फैक्चुअल्स और एनालिसिस ऊपर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जदि देखियो कि इज एन गवर्नमेंट स्कीम दैट एम्स इट्स अ गवर्नमेंट स्कीम that aims to provide the electricity to households in India basically electricity in India the scheme was launched by the Prime Minister Narendra Modi on February 15 February 2024 एटा प्रथमे लॉन्च हेतला प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस क्वेश्चन जदि पचारिबे इंसेप्शन जेमति तमे पचारछो नीति आयोग केबे हेतला सिम्पली एक्जेक्टली द सेम मैंने दे आस्क द क्वेश्चंस व्हेन इट हैज इंसेप्टेड माने प्रथमे आरंभ केबे हेतला इट इज ऑन द 2004 February right on the starting first quarter of the that year अच्छा आ गुडे कोन क्वेश्चन आसबा दिस इज वन क्वेश्चन हला प्रीलिम्स पे मुझे हबम सेट लिखबे प्री क्वेश्चन दिस इज एन प्री प्रीलिम्स बेसिस रे क्वेश्चंस गुडे आसीबो एई हला नेक्स्ट वर्तमान देखितो कि धीरे धीरे तमे देखितो कि सब जगह वर्तमान सोलर रो पीवी सेल्स वर्तमान लागुची एंड पीपल आर कमिंग गवर्नमेंट आर गिविंग सब्सिडीज ओके ए पीएम घर सूर्य घर ऊपर डिटेल ले जानिबा अंडर दिस स्कीम हाउसहोल्ड्स विल बी प्रोवाइडेड विथ सब्सिडी हला सब हाउसहोल्ड्स मान को प्रोवाइड करब सब्सिडी with installed solar panels on their roofs thank roofs upare installed solar panels on the roofs the subsidy will cover 40% of the cost of the solar panel माने can you imagine जदि तमे 100 टंका होची सपोज लेट्स से सोलर पैनल दाम ता भितरे 40% तुमको 40 टंका रे रिहाती मिलियो सब्सिडी मिलियो
this is the माने one of the largest जब देखियो कि program in the world जोटा कि PM हर घर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्राइम मिनिस्टर का, and that will be such a large scale your subsidy, right? Rooftop मन रखो for the roofs रे जहार जहार आगु देखिबा the scheme expected to benefit का कौन करिवो 1 crore पाखापाखी 1 crore households across India, provide 300 units free electricity per month. एटा गोटे नोट करो जोड़ा जोड़ा मो ब्लैक एंड रखी दैट विल हेल्पफुल इन योर प्रीलिम्स क्वेश्चंस रे 300 यूनिट्स मन रखो 300 यूनिट्स केते यूनिट हबो 300 यूनिट बेले तुम क्वेश्चन एमती पचार तो प्रीलिम्स रे कि भाई कितना यूनिट 500 600 कितना तुम सेठी लिखिबो कि नहीं 300 यूनिट, राइट? यू विल गो फॉर द 300 यूनिट जोड़ा जोड़ा म कहूची तुम खाली शॉर्ट रे लिखि दियो कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना एई जिंसो गडा कीवर्ड गडा दीज आर द कीवर्ड्स आई एम टेलिंग what are the keywords that helps you in your exams जेमति मु कहली कि केबे हेतला इंसेप्शन 15th Feb, राइट? 15th February 2024 सेकंड रहबो कोन रूफटॉप, ठीक है? 40% सब्सिडी 40% सब्सिडी ऑन रूफटॉप हला ऑन रूफटॉप इंस्टॉलेशन, ओके? रूफटॉप एगुडा सो एमती एमती लिखि दियो हला जस्ट खाली गोटे प्रथमटा कहि दउ जेमति थर्ड रे 300 यूनिट्स पर मंथ हला 300 units per month, right? These are the key points that you have to write. A key points गुड़ा ही तमें लिखी वही side, right? So it is an estimated that this will save the government 75,000 crore per year in electricity cost. जल्दी देखियो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा फायदा क्या हो रहा है, कौन टा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रा फायदा होची पाखापाखी 75,000 crore रो गवर्नमेंट रा फायदा हो, ओके? एटी तुम लिखि परिबो 75,000 crore हला सीआर प्रॉफिट गवर्नमेंट रो तार कॉस्ट सेविंग करि परिबो हला, सॉरी इट इज सेव कॉस्ट हो प्रॉफिट नो सेव, ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो इन प्रॉफिट वी कैन से इट इज हमरो सेविंग हे परिबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दिस इज इते बड़ो गोटे हमरो इंडिया पई गोटे बहुत बड़ो दिस पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आगाम देखियो आई एम एक्सपेक्टिंग बाय 2030 समस्त घरे प्राय तो 40% इंडिया रे घरे solar rooftop lagi jayto because government ro धीरे धीरे you know this is percolating to the masses, right? Next jiba eligibility criteria kon देखियो समस्त तो नहीं परिबे what should be the eligibility criteria देखियो तो households must be an Indian citizen, right? Household must be an Indian citizen समस्त नहीं परिबेनी जदि जने foreign NRI रोची cannot apply for that one to avail this subsidy, he must be an Indian citizen मन रखो एगुडा सब क्वेश्चंस these are all prelims रा एडा सब क्राइटेरिया पडिबो हला these are all prelims questions these are मन रखो ए सब जिन छोड़ा पचार कोन is an Indian citizen, the household must own a house with roof that is suitable for installing solar panels हला तार गोटे क्राइटेरिया अछि जो माने भी हाउस नेबे ताका भितरे सोलर रूफ थिवो माने आई मीन हाउस हैज प्रोवाइडेड विथ a रूफ ऊपर से माने करि पड़थबे हला इंस्टॉलेशन रो माने देखो सेतरे कोन हेवी ड्रिलिंग होबो लोहा लागिवो आयरन पिलर लागिवो ड्रिलिंग होबो, सो यू कैन नॉट गो फॉर एन मॉड हट गोटा हट तमे कुडिया बने जो तापर हे परिबो, ओके? सो देयर आर सम क्राइटेरियाज दैट हैज टू बी फॉलोड अप, सो गवर्नमेंट इज हेल्पलेस ऑन दिस ग्राउंड आगु को 10 वर्ष पर कोन हो दैट इज अ डिफरेंट इशू बट वर्तमान केस रे you know your concrete roof should be there. The household must have an valid electricity connection, gote electricity connection thibo valid electricity connection. The household must not have availed any other subsidy for solar panels. Other than this, any other previous solar panels through किसी से benefit no थो, है ना? एडी मन रखो must not have availed, है ना? एडी must not have availed other subsidy for the solar panels. ठीक है? So these are the criteria जोटा कि हम देखले इंडियन सिटीजन से थियो रूफ थिबो गोटे ओन रूफ थियो जोतरे कि इंस्टॉलेशन हे पड़थो सोलर माने पीवी सेल्स रो, ओके? सोलर पैनल्स हे पड़थो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन निश्चित रूप से घरे गोटे थिबो एंड प्लस अदर देन दैट अलगा किसी सब्सिडी से नै नथो माने अदर हाउसहोल्ड मस्ट नॉट हैव अवेल्ड आउ किसी अवेल से माने करि नथिबे रिगार्डिंग दिस सोलर प्रोजेक्ट नै, ओके? दिस हैज टू बी वेरी क्लियर ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ए चारिटा हला मेन क्राइटेरिया नोट रे कोन दीजिए हमें देखियो द पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना the world's largest domestic rooftop solar initiative. जदि हमें देखिबा कि if we compare our project with Brazil, if we compare our project with China, US, ता भितर भी सबुठ जदि बड़ो जदि देखिबो हला हमर इंडिया रे हला सोलर ए जो पीएम हर घर मुफ्त बिजली योजना वर्ल्ड रे सबुठ यू नो माने one of the largest project हला टेक a note of this.
rooftop initiative is transforming India's energy landscapes with bold vision. India landscape to supply solar power to 1 crore households. Hala pakavaki 1 crore households, that is by March 2027. So amar jo prime minister, amar jo ministry of मन रख वर्तमान जो है ministry of new and renewable energy. तमें कौन लिखियो? Ministry of, right, ministry of new and renewable, मन रख new and renewable energy. Please make a note. हला ministry of new and renewable energy. Don't go for writing only renewable energy. No. हला. So 2027 सुधा March 2027 सुधा we are for the installation of the solar power to 1 crore households. एटा भी एक question. This is also a question, please. हला. This is also a PT questions. Prelims. मुझे लिखी दूँगी. 3 questions है. Right? 1 crore households. केबे सुधा March 2027. हला. एटा गोटे note करी रखो. This transformation कौन होगा? This ये जो initiative निया हो, this transformation initiative empowers millions to adopt clean energy. So Vartaman, the need of India is clean energy. We need clean energy for our very survival. I mean, निजे बंचिया पे हमको प्रथमे clean energy दरकार, right? So that reinforcing India's commitment to sustainable development and energy innovations. हला India जो sustainable development process जोटा अच्छी, right? That is fine. It is very much required. This PM. PM your Surya Ghar Muft Bijli Yojana. This is very much important for India's sustainable vision. Amar jo achi sa SDG goals 2030. It is very much compliant. Of course, India is getting money help aid from your international forum, but सेटा को बहुत जब हम देखिए comparatively it is very less. We are self-sufficient now. Further आगू बढ़िबा. Is it clear? Is it okay to everyone? Is it okay to everyone? वर्तमान गोटे एस्टिमेशन देखो एटी गोटे एस्टिमेशन में कौन देखा है लुक एट दिस डायग्राम है यही गोटे अच्छी गोटे बार डायग्राम से जस्ट देखो कि प्रोजेक्ट ग्रोथ इंस्टॉलेशन अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 1 करोड़ एटा अच्छी केते एटी हम लिख दूची एटी साइड टिके तळे रही हिची एटा हला डिसेंबर राइट एटा हला डिसेंबर 2024 दिस वन एंड एटा हला तमरो just a minute December then March eta hala March hala this is your March 25 this is your October 2025 then it is your March 26 and now March 27 look at the diagram वर्तमान जदि हम देखिया projected growth of installation वर्तमान सुद्धा जदि हम practical देखिबा कोनटा हेची हला भला पे मन देखि सुनो डेवलपमेंट दीज आर आल्सो हेल्प यू इन योर हला प्रीलिम्स रे एनालिसिस क्वेश्चन आसुची डेफिनेटली एटा तुमको हेल्प हो हला सो बी अलर्ट विथ सीट विथ पेन पेपर एंड राइट कोन अछि हला मेंस तो डेफिनेटली तमे बुझुचो सेम जिंस आगु भी तुमको हेल्प हो राइट प्रथमे डिसेंबर 25 रे 2024 रे सॉरी केते थिला 6.3 लाख इंस्टॉलेशन हेतिला मार्च 25 रे हला गत वर्ष 10 लाख वर्तमान अक्टोबर रे हला 6 मास तळे दैट इज योर 20 लाख वर्तमान 2 मास तळे हेतिला केते 40 लाख आउ वर्तमान हमर एम अछि 1 करोड़ सो 40 लाख रु 1 करोड़ पहुंचिया पे डेफिनेटली गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट बहुत सारा वर्तमान प्रोग्राम इनिशिएटिव करछ आई मीन स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो दिस वेरी रिलीजियसली go in the every districts put send your own volunteers or the government officers they could convey the message at the block level at the panchayat level they should understand sabu jagar eta government ro kochu so definitely will achieve this figure 1 crore right वर्तमान सुधा केते हेगलानी 40 lakhs मार्च सुधा हे जाईछि माने मार्च रे वर्तमान तो आहुरी बढी जीवनी पाखा पाखी मे लास्ट हेलानी पाखा पाखी near the what we are touching near about 50 lakhs पाखा पाखी right so definitely will achieve this one so this is all about your PM हैला हर घर मुफ्त बिजली योजना PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नेक्स्ट आसीबा में प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम नेक्स्ट स्कीम गला योर प्रधानमंत्री कुसुम सो व्हाट इज कुसुम इट लुक्स लाइक एडी तमे कोन देखुछो एग्रीकल्चर हैला तमे देखुछो कि माने देयर आर सम क्रॉप्स आर देयर एंड सम सोलर पैनल्स आर देयर एंड पंप्स इज आल्सो देयर वर्तमान ये जो PM कुसुम जदि नेउछि ना कृषि कल्याण योजना माने खास करके एग्रीकल्चर सेक्टर दिस इज रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर सेक्टर
राइट जदि हम देखियो दिस इज रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर सेक्टर हला एग्रीकल्चर सेक्टर को एटा रिलेट होची पीएम कुसुम अच्छा देखिए वर्तमान कौन पीएम कुसुम रे पीएम कुसुम इज बेसिकली प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान ए जो है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना जदि एटा देखियो महाअभियान ए जो अच्छी है प्रधानमंत्री कौन पे इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री मन इंडिया जदि हम देखो इट्स एन एग्रेरियन कंट्री है मेजॉरिटी ऑफ आवर पॉपुलेशन they depend on the agriculture as the livelihood agriculture and agro based industries for example if I say still agriculture as an has an contributions to our economy 18% approximate 18% 17 point something or 18% we can say 18 plus or we are बराबर होगा आसपास बट आ परे भी जदि हमें देखिबा कि जेहेतु बहुत सारा लोक डिपेंडेंट अछन एग्रीकल्चर एज द प्राइमरी ऑक्युपेशन दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट थॉट ऑफ अबाउट दिस स्कीम्स पीएम कुसुम राइट किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना एटा भी गोटे क्वेश्चन मन रख एटा भी गोटे क्वेश्चन तुम पई हबो पीएम कुसुम रो फुल फॉर्म्स माने मन रख आउ से हिसाब रे आउ कोन दे दितबे हैला प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान आगु बढ़िबा दिस स्कीम रो मेजर कोन स्कीम फॉर डिजिटलाइजेशन ऑफ फार्म सेक्टर एंड एनहांसिंग इनकम ऑफ फार्मर्स फार्मर मानकर इनकम को बढ़ेबो प्लस डिजिटलाइजेशन आगु माने कोन मोटर जो से करथले निजर माने एठी तमे देखुछो फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर दे आर यूजिंग मोटर पंप्स डीजल पंप यूज करथले दैट इज आल्सो योर पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट इन अ मास स्केल जदि हम देखा पूरा कंट्री वाइड रे सो ताको कोन करिवे डिजिटलाइजेशन केमती थ्रू अगेन सोलर पावर अंडर दिस स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट केते दोची सब्सिडी अप टू 20 हला 2006 रो 30 to 50% can you imagine 30 to 50% सेठी केते थिला 40% 30 to 50% हला सेठी माने कोडा को पीएम सूर्य घर रे ठीक अछि मुफ्त बिजली योजना 40% एठी हला 30 to 50 मेक ए नोट ऑफ दिस फॉर द टोटल कॉस्ट इज गिवन टू द इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड एलोन सोलर पंप्स installation for the solar pumps में and also solarization of existing connected agriculture pumps माने जो कृषक भाई मानक पाखरे हमर कृषक भाई मानक पाखरे जो भी संग पंप लागिथिला those are basically diesel pumps now government has visualized to eliminate that one and to install the solar based pump basically those pumps are driven by the solar energy right for the farmers can also install grid connected to solar power plants up to 2 megawatt मन रखो सेमान आउ कोन सुविधा होला फर्दर फार्मर माने भी ताकू चलिया पे तमर दरकार ना गोटे बेस दरकार ना सेति कोन होला इंस्टॉल ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स सेमाने निज क्षेत्र रे रेस्पेक्टिवली बसे दैट मींस देखो हाउ एम्पावर्ड दिस स्कीम्स हाउ एम्पावर्ड और मेकिंग इंडिपेंडेंट टू ए फार्मर राइट so under the scheme of their barren fallow land and sell electricity to local your distribution discom माने कोन discom माने हला distribution companies हला एठी म लिखि दछु discom कंफ्यूज होबनी distribution companies हला distribution companies discom हला ए tariff determined by the state regulator for example मु कभी हम एरिया जिंदे टाटा पावर नीच हला एई मानदेव बिहार कटक एरिया हमर ए जे टाटा पावर so Tata Power जदि एठी जने कृषक बसला माने if you go to the fringe area of this block 47 ward number then respectively he has to वर्तमान कोन रहउची कि टैरिफ डिटरमिन वर्तमान गवर्नमेंट भी बहुत सुविधा भी दउची तमे देखतो मुफ्त तमे जे 300 यूनिट फ्री हला पर बाकी तमरो जेमति मोबाइल ले जेमति डाटा सेव होची सेमति सेव हे जो एंड विल बहुत सारा तमरो यू कैन सेव योर मनी so like this the farmer also can this scheme is being implemented by the designated department of the state government so bartaman khali to central government kariboni state governments are also addressed to to regularize this pm kusum and make them implementation at the root level le heba bahut jaruri because as bhi mu kahibi the very India means the majority of India resides in village still because after all we have still 37% were urbanized remaining in the countryside so China रे समस्त मन urban area Shanghai रे समस्त मन Beijing रे Wuhan रे रोचन no maximum people to the countryside से माने भी सेटा को वर्तमान भी ताको जदी देखिबो कि स्मार्ट विलेज वर्तमान कांसेप्ट आसला
So that is what jodi seti hei par ame kai kari pare. It's all about needed the vision and the willpower, right? Good morning, good morning, good morning. How are you? Okay, next देखियो आगु बढ़िया पीएम कुसुम रो objective. Government of India, what is the objective? Government of India, what is the objective? है I hope everyone is making a note of this, right? समझते जो जो important point हमें discuss कर चु जब हम आगु देखियो with reference to commitment made कौन हिच government रा जब हमें background history देखिबा India has made commitment in the Paris agreement related to your carbon emissions, reducing the carbon emissions. कौन करथिला Paris agreement in 2015 2015 जो Paris agreement हितला India has committed to have 40% installed power generation capacity from non-fossil fuel source by 2030 मन रख एटा गोटे बहुत बड़ तमरा prelims ପାଇଁ बहुत important prelims mains सब जिंस ପାଇଁ ହେଲା prelims questions ପାଇଁ this is very important prelims also mains and also your interview बहुत important Paris agreement रे India has committed to by कौन commit करथला by 2030 सुधा हमें 40% हमर power installation माने draw करिबा from the non fossil fuel sources ता माने ए renewable energy source हैला ता भितरु यार रोल बहुत important to have 40% installed power generation capacity power capacity installed हमें करिथला right आगु बढ़िबा I'm good thank you okay. So government of India approved कौन करथिला government of India approved PM Kusum okay PM Kusum on February 2009 it a good question this is also an questions हैला medical this is also an PT questions केबे करथिला February 2019 with the objective of providing energy and water security to farmers right एटा से लिखि नबो निजरा हैला question आकार फॉर्म रे देनी because बहुत सारा आज एनालिसिस अछि I hope everyone stays with this one and get the benefits खाली सुनिले भी बहुत जिंस मन नै जो और केबड़ छोटो जिंस I'm just expecting from this class sit with the pen and paper and every individuals जेमति हमें मुफ्त बिजली योजना PM कुसुम सबुतरे खाली important points गुडा जो बोल्ड लेटर करी लिखे दो and मन रख निजर हाथ लेखा इत्ते हेल्पफुल हो तुम एग्जाम only cannot imagine which is not only in the stage 1 also in main stage 2 and also in stage 3 this is just follow my words you'll definitely will get you will be beneficials right कौन हम जदि देखियो it is providing objective to providing energy and water security to the farmers केवल खाली water no energy security be farmers can avail that one so enhance it is also simultaneously it is also enhance their income de-diesel and the farm sector and the reduce the environmental pollution so these are the benefits that the farmers gets these are the benefits right these are the benefits जदि तुमको पचारला केतळे क्वेश्चन रे हला पॉइंट रे जीएस रे पॉइंट देखि these are the benefits next PM Kusum scheme is one of the largest initiative of the world to provide clean energy जदि हमें देखिबा कि PM Kusum पछरे गवर्नमेंट रा कोन प्लान it is the largest scheme to provide clean energy okay provide clean energy to more than 35 lakh farmers पाखापाखी 35 लाख फार्मर को प्रोवाइड कराबो by solarizing their agriculture pump मन रखो major PM Kusum रे हला agriculture pump हला major कोन हला agriculture pump is major source agriculture pump the scheme has direct employment generation potential the scheme रे कोन अछि it has got direct employment generation potential the scheme is likely to generate employment opportunity पाखापाखी equivalent to 7.55 lakh पाखापाखी let's say 7.6 lakhs job years by skilled and unskilled worker मन रखो ए PM Kusum रे कोन employment opportunity भी माने we can one your adult youth in the village area okay they can get the job also of course government needs the manpower of the workforce to implement this project so that is what this project ए जो project अच्छे PM Kusum has very much potential in creating the job opportunities right आगु बढ़िबा next third program को मैं आसीबा that is your national green hydrogen mission H2 national green hydrogen mission मन रखो national green hydrogen mission that is हैला national green hydrogen mission जदि हमें देखिबा कोन इथरे अछि national green hydrogen mission वर्तमान तो hydrogen fuel concept ऊपर देखो everyone is goes behind the national hydrogen fuel
एक्चुअली एथरे अच्छी कोन आज हम ए डिटेलटा जानिबा हाइड्रोजन फ्यूएल रे अच्छी कोन बेसिकली हाइड्रोजन इज बेसिकली एन क्लीन एनर्जी मन रखो हाइड्रोजन इज बेसिकली ए क्लीन एनर्जी हाइड्रोजन राइट वर्तमान देखिबा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कोन अछि टू मेक इंडिया द ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन India to make the India for global hub for your production, usage and export of green hydrogen, right? Green hydrogen and its derivatives. This will contribute to India's aim to become Atmanirbhar, okay? Atmanirbhar through clean energy, serve as inspirations for the global clean energy transition. But hydrogen fuel, बहुत important questions hydrogen fuel जो हमें देखा green hydrogen. केमती रोची? The mission will lead to green hydrogen केमती होची also we'll discuss. Don't worry. The mission will lead to significant decarbonization of the economy. Decarbonization of the economy. Reduced dependence on fossil fuel imports. Hydrogen fossil dependency fossil fuel import upare reduce karibo dependency and enable India to assume technology and market leadership in green hydrogen. So globally जो हमें देखो India is going to an emerging leader in the green hydrogen power generation. Excuse me. This line with the vision becoming a developed nations by 2047 and achieving net zero by 2070. Again, जो हमें COP conference 26 रे Glasgow summit रे India commit करके असला by 2070 will go for the zero carbon emission nation, right? So that is what we are stick to our goal objective. हम लोग ऐसे हवा में नहीं बात कर रहे हैं. We are doing trying our best, unlike the other countries in Europe and other part of the globe, right? India is very much consistent with its the commitment what it has, right? It has in your Glasgow summit, Paris agreement, one of it sort of. Again, further, the Indian government launched the National Green Hydrogen Mission in 2023 as an umbrella program that aims to establish green hydrogen ecosystem. Okay, green hydrogen ecosystem and catalyze systematic response to opportunities and challenges. Systematic opportunity and challenges in this sector. It aims to build capacity and ecosystem required position India as a global leader in the clean hydrogen. Clean hydrogen upre government of India means India will lead a global leader. Agu badhiya puni. What is now it is coming. What is green hydrogen? Green hydrogen माने कौन हमें देखो green hydrogen माने कौन? Basically, जो by definition we'll see hydrogen produced using renewable energy. Hydrogen produced using renewable energy such as solar, wind power instead of fossil fuels. है ना? Solar, wind power use होची instead of fossil fuels, right? Process कौन रहेगा? ए process रे कौन हुए? Water is split into hydrogen and oxygen. माने water H2O जदि हमें देखिए it is split into hydrogen and oxygen, right? Hydrogen and oxygen. Water split है ला. By a co-process, it is by the process of electrolysis. Electrolysis powered by clean energy from solar panels or wind turbines, right? These are sir. Clean energy from the solar, your clean energy that is from solar panels or the wind turbines. Now, these are use solar or wind. This is also a question. Solar and wind. Water split है ला कोटि की hydrogen and oxygen को. Then latter. This clean energy from the solar panel and water turbines. It are good questions. This is also a question. Prelims fine. This is also a pre-questions, right? कौन use होची? green hydrogen वर्तमान बहुत ही emerging topic, बहुत ही emerging, right? कौन use होची? Solar और wind power. Hydrogen produced using renewable energy. माने गोटे energy renewable energy clean energy produce होची. आउ गोटे renewable clean energy यूज नहीं ताकू सोलार और विंड मन रख राइट सो भूल ले भी बायोमास मारी बोल एज ऑफ नाउ वर्तमान बायोमास है नहीं ओनली सोलार एंड विंड सो इमिशन स्टैंडर्ड कौन अछि एज पर द इंडियन नॉर्म्स इट क्वालिफाइज ग्रीन
केमती ग्रीन इंडिया रे जदि हम देखिबा इमिशन नॉर्म्स रे इट क्वालिफाइज एज ए ग्रीन प्रथम बुझ एटा गोटे 100% गोटे क्वेश्चंस मते लागुची ठीक अछि केमती क्वालिफाई माने जदि हम देखिबा कि दिस इज वेरी एसेसन रीजनिंग हे पारे कि वेरी कॉन्सेप्चुअल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पाई हैला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पे मु कहबी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पाई एटा बहुत इंपोर्टेंट रहबो कोन इमिशन एज पर द इंडियन नॉर्म्स ग्रीन इमिशन इज वेरी लो हैला जदि हम देखिबा if emission जदि emission माने कार्बन emission होची is very low not more than मन रख not more than 2 kg of CO2 2 kg CO2 रो अधिक हबनी ताकू ग्रीन एनर्जी को आजो सही कांसेप्ट रे 2 kg of 80 मन रख not more than 2 kg of CO2 तुमको परीक्षा रे दे देबे कोन तुम खाली मन तो सार तो 2 kg CO2 कहितले हैला बट एटी कोन लिखा है not more than 2 kg CO2 हबनी ए माने कोन करते चालाकी हम करी नॉट टा काटी देथिबे more than CO2 नो 2 kg रू कम CO2 equivalent to for every 1 kg hydrogen produced हैला प्रति less than 2 kg CO2 production रे गोटे kg hydrogen तमर बाहर that is जदी से criteria fulfill करूथो then the word very word we can tell green hydrogen हैला मन रख एटा हैला alternate source कोन हमें देखिबा yes माने okay I will explain again इमिशन स्टैंडर्ड कौन देला जदि हम एठी कहउछंदी कोन ग्रीन हाइड्रोजन एठी हम कहउछंदी कोन ग्रीन हाइड्रोजन ठीक अछि सो वर्तमान कोन अछि या पे गोटे पैरामीटर रखा है को केस रा को कुहा जीवो ग्रीन इन व्हिच केस इट विल कॉल एज ग्रीन हाइड्रोजन माने ग्रीन कांसेप्ट ता कोन पे रहला माने पर्टिकुलर नोशन ता ग्रीन व्हाट ता वी कैन नॉट से दैट ग्रीन हाइड्रोजन इफ इट कंप्लाइज ग्रीन हाइड्रोजन हेबा कंप्लाई हेबो कोन होबो कि प्रति प्रति जदि हम देखिबा कि जो भी इमिशन होची समान तो किछिटा इंधन यूज करिवे मन रख मु तुम एठी कहूची जदियो से माने यूज कले सोलर एंड विंड किंतु फिर भी सेही सोलर एंड विंड रे किछिटा से माने फॉसिल फ्यूल यूज करिवे काहे कि रे इग्निशन टेंपरेचर में फॉर योर एठी मु बुझिया पई कहि दोची कंफ्यूजन टा हैला दिस इज रिक्वायर्ड हैला फ्यू वेरी लेस और वेरी फ्यू हैला लिखली वेरी फ्यू fossils coal or let's say your CNG ठीक है required to for ignition temperature मन रख सबु जिंस पछर किछि गोटे थाए राज गवर्नमेंट एटी कोन जदी बा कहला बट इट इज वेरी नेग्लिजिबल प्रथमे एतले गोटे इग्नाइट करिया पे गरम करिया पे प्रथमे हला कोन कैलोरीफिक वैल्यू दरकार सेति पई से केस रे कोल आउ सीएनजी टा यूज हुए एटा मन रख हला बिट कंफ्यूजिंग प्रथम कि हमें कहउजंदी सर कि सोलर आउ विंड पावर पुनी एटी कहलेनी कि CO2 इमिशन तो सेही केस रे कोन असला कोल आउ सीएनजी काहे कि दरकार कैलोरीफिक इग्निशन टेंपरेचर पे इग्निशन टेंपरेचर माने व्हेन इट इज द स्टार्टिंग टा करी कि इग्नाइट करी कि तापर से माने यूज करबे काहा को सोलर एंड विंड को होप इट इज क्लियर मलाई गुड मॉर्निंग इज इट क्लियर जदियो मैक्सिमम हला सोलर और विंड पावर यूज होची हला लेट्स से 90% 85 to 90% स्टिल 10% एनर्जी इग्निशन पे रिक्वायर्ड होची जोटा कि गरम करियो प्रथमे कैलोरीफिक वैल्यू देखि बाकु कोल आउ सीएनजी समान यूज करछन सेही केस रे कोन होबो इट शुड बी लेस देन 2 kg ऑफ CO2 जोटा कि प्रति 1 kg हला 1 kg हाइड्रोजन प्रोडक्शन होची इज इट ओके इज इट क्लियर ओके गुड नेक्स्ट हम जिबा अल्टरनेट सोर्स कोन हे पारे ठीक अछि अल्टरनेट सोर्स कोन हे पारे मन रख एटा खाली मन रख तो इग्निशन टेंपरेचर पे इग्निशन टेंपरेचर इज वेरी मच रिक्वायर्ड राइट नेक्स्ट अल्टरनेट सोर्स कोन green hydrogen can also be produced by by your जदि converting biomass like your agriculture waste hydrogen as long as emission remains below the same limit जदि emission सही समय एठी आ गोटे जिंस कोन होची as long as the emission below the limit रहइबो हैला emission remain below the same limit जदि रहइबो सेही केस रे भी माने धर ignition हे कि पूरा माने सेम कांस्टेंट टेंपरेचर रे से माने गरम हैला राइट इन दैट केस आल्सो वी कैन यूज द एग्रीकल्चर वेस्ट भी यूज हे पारिबो राइट काहेकि सब जंक again we are sustaining visualizing for you are retaining our power from the non fossil fuels that is what the major aim alternate source रे ठीक दिया हला गवर्नमेंट मुडा काहे कि देले why because काहे ना के क्वेश्चन जदि से इंसर्ट कर देबे जदि स्टेटमेंट 1 2 3 4 5 बर्तन पकोचंदी so these are all will helpful in the statement based questions right
नेक्स्ट जीवा बाय 2030 2030 सुधा ठीक अछि the mission will be supported by about 125 gigawatt है the mission will be supported by 125 gigawatt of new renewable energy capacity है new renewable energy capacity dedicated green hydrogen productions 2030 सुधा पाखापाखि है it is supported about 125 gigawatt पाखापाखि 125 gigawatt of new renewable energy capacity dedicated to green hydrogen production. This is also a question. Green hydrogen 125 gigawatt mega hala tamara 10 to the power 6 giga hala 10 to the power 9. This is your giga मन रख और mega hala tamara 10 to the power 6 meg you should know why difference है जदि एटी दे देथियो 125 तमे मन रखियो 125 सर कहितले किंतु दे देथियो मेगावाट सेठी भूल गेला सेठी गीगावाट तमे मन रख राइट. So along with investment exceeding 8 lakh crore केते गवर्नमेंट रो बजट अछि 8 लाख crore एडा सब टिके मन रखिया को हैला. This is also an important point to note. The mission expected to create over 6 lakh jobs पाखापाखि ए जो मिशन रे कोन हो पाखापाखि ग्रीन हाइड्रोजन रे पाखापाखि 6 lakhs job create होबो राइट. ए मिशन रे पाखापाखि गवर्नमेंट इज गोइंग टू क्रिएट द 6 lakhs jobs, reduce fossil fuel imports by more than 1 lakh crore. Can you imagine पाखापाखि 1 lakh crore import हैला जदि हमें देखिबा मॉनेटरी कन्वर्सन देखिबा पाखापाखि 1 lakh crore इंडिया विल सेव. Just imagine हैला fossil reduce fossil fuel imports more than 1 lakh crore minimum हैला हमें सेव कर परबो गवर्नमेंट इंडिया. So and avoid nearly 50 million metric ton of greenhouse gas emission every year by 2010. This is an এটা বহুত বড় গোটে বহুত ইম্পর্টান্ট এই যদি আমি দেখিবা this is a very important para এতে বহুত জিনিস গवर्नमेंट ର ଅଛି কোন इंडिया फायदा पाए मॉनेटरी वैल्यूज रे हमें 1 लाख पाखापाखि हमें 1 लाख करोड़ मिनिमम हम सेव करछंती 50 million ton ग्रीन हाउस गैस हमें सेव करछंती बाय ईयर 2030 and also it has potential to create 6 lakhs jobs. My goodness, that is what the government has, and this Ministry of New and Renewable Energy has one of the very important department for the government of India but now, and it is under the direct supervision of our Prime Minister. Further agu badiba initiative by government of India India for the production of green hydrogen. कौन है गवर्नमेंट कौन इनिशिएटिव नहीं এটা ଗୋଟେ ବହୁତ ଲମ୍ବା statement based questions और questions can be asked in a very different form but the green hydrogen इंटरव्यू रे देखो मैक्सिमम पिलां को मोर पचारछन एथर हमर जो भी एथर मॉक इंटरव्यू लेथली माने कहले कि से डायरेक्ट इशू जिंस ओडा पचारछन. ऑफ कोर्स दिस इज तो रेगुलरली एथर का मु नेला बडे इंटरव्यू नॉट लेस देन 1 आवर पाका पाकी 55 मिनिट घंटे से पिलां को निया दिस इज ऑल अबाउट ओन एफर्ट तो निजुक भी सेटिंग पढिया पड़िबो अदरवाइज यू कैन नॉट मीट द एक्सपेक्टेशन कंटेंट हमें जदी खाली 20 मिनिट भाबी छाड़ दो इट इज नॉट that is definitely that will not help the candidates to increase their moral level. अच्छा इंटरव्यू कथा कुछ बर्तमान एई सब जिंस केमते रिलेट करिवा हमें स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन कोन कहली स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन स्कीम basically in financial incentive mechanism. This is a financial incentive mechanism with outlay of पाखापाखि 17,500 कोटी टका. लेट्स से 17.5k crore 17,500 कोटी टका अप्रोक्सीमेट अप टू 2930 पाखापाखि गवर्नमेंट रे देछि केते 2029-30 सुधा प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स हैला इलेक्ट्रोलाइजर्स. ऑफ कोर्स हाइड्रोजन मु प्रथम मन रखो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस रे कोन होछि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस रे थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडी मन रखो थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हैला इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोजन वाटर रु कोन अलगा होछि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जोटा के एठी मु कहै इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस थ्रू अलगा होछि हाइड्रोजन वाटर रु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नॉर्मल सी जो गवर्नमेंट खर्च करछि 17,500 कोटी टका मन रखो काहे कि अगेन व्हाई गवर्नमेंट काहे कि खर्च करछि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जोटा कि मु तुमको आरंभ रे एठी कहितले जस्ट लुक एट हियर हैला एठी तुम देखुछो हैला थ्रू द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमी थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस राइट ए प्रोसेस रे through the via electrolysis process रे एक केस रे empowered to clean energy solar panels और wind turbines में इथे दरकार होछ हैला जस्ट मेक ए नोट ऑफ दिस गवर्नमेंट काहे केते पैसा खर्च करछि
खाली गोष्ठी देला हबनी हमको मन रखिया को हला कि गवर्नमेंट कोन पे इते पैसा खर्च करछ व्हाट इज द मेकानिज्म बिहाइंड दैट व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड दिस वन हला नेक्स्ट आगु जिबा purpose of financial incentives to boost domestic manufacturing of electrolyzers that are used to production of green hydrogen hela basically their production of the green hydrogen so hame janle it is the process of electrolysis that separate your oxygen from hydrogen okay from water ru separate korche oxygen and hydrogen right again development of hydrogen hubs kon government plan korche development of the hydrogen hubs this is also very important government of India what is its plan development of the hubs hydrogen hubs देखो एटा तो बहुत बड़ा आर्टिकल गोटे जदी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एनर्जी रिसोर्स इट्स अ वेरी गुड वेरी लेंथी आर्टिकल बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कौन से पचारिबे बेस्ड ऑन दैट इट टुक्स आवर्स एंड आवर्स टू मेक दिस so I hope ए जो शॉर्ट डिस्कशन डेफिनेटली टू हेल्प यू इन योर एग्जाम तमे सिटको just my one expectation from all of you while sitting in my class please sit with a pen and paper and just jot down the important points that will help you know the jette lekhibo your memory sete sedimentize hobo means you will the memory will be basic tame mane rakhi paribo will be get memory will be powerful unless until khali listening kale hobani jodi listen karucho lekhucho it will be more fruitful October 2025 रे किछि मास तळे the Ministry of New Renewable Energy Department has announced that recognition of three major ports will serve as an integrated centers for the production consumption centers for production consumption and future export areas as follows तीनिटा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी घोषणा कला अक्टोबर फ्यू मंथ्स बैक अक्टोबर 2025 रे कि तीनिटा इंडिया रे पोर्ट को चूज कराला जो माने कोन करिवे हैला दे आर द मेजर सेंटर इंटीग्रेटेड सेंटर्स जो माने करि परिबे कोन प्रोडक्शन ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन करिवे कंजम्पशन करिवे एंड फ्यूचर रे एक्सपोर्ट पई करिवे जस्ट लुक एट द मैप हियर कोन में देखले इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब्स को थ्री मेजर पोर्ट्स लिखली कोन थ्री मेजर पोर्ट्स हैला थ्री मेजर पोर्ट्स गोटे हैला नंबर 1 रे की आसी हमर पारादीप हैला पारादीप देन एटी आसी के दीनदयाल पोर्ट हु कैन से दीनदयाल पोर्ट हैला नथिंग बट योर कांडला पोर्ट प्लीज मेक ए नोट कांडला पोर्ट हैला तीनटा पोर्ट कांडला पोर्ट जोटा कि जहां ना है दीनदयाल हैला दीनदयाल पोर्ट दीनदयाल उपाध्याय हैला आरएसएस लीडर फाउंडिंग मेंबर ऑफ आरएसएस then Chidambaram port in Tamil Nadu then that is your another port is your Chidambaram eta so questions Chidambaram port in Tamil Nadu re Chidambaram port Paradip port हैला आउ कांडला पोर्ट आ गोटे हैला तमरा Tamil Nadu माने ईस्ट रहला की पारादीप हमर ओडिसा तीनटा स्टेट केतरा क्वेश्चन हे परिबो कोन तामन रहला की ओडिसा देन वेस्ट रे गुजरात साउथ रे तमिलनाडु पोर्ट वाइज एटी देखो तोर 5-6टा क्वेश्चन हेगला ई जगह हैला सो दीज आर द सेंटर एमाने कोन करबे ए जगह ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन सब सेमान ताको सप्लाई करबे प्लस अदर कंट्री को सेमान एक्सपोर्ट करबे सो दिस इज द विजन दैट गवर्नमेंट हाउ विजुअलाइजेस फॉर अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी होप इट इज क्लियर टू एवरीवन गुड मॉर्निंग hope it is clear three major ports we are talking about one is your Paradip port another is your Kandla port which is named as the Deendayal Upadhyaya port in Gujarat that is in the Kutch area this is Kandla port is here manaka this is Kandla right this is your Kandla port and another is your Chidambaram port in Tamil Nadu right agu badiva so this is all about your green hydrogen energy hope it is clear to everyone shall we proceed for the next okay next आसुची हमरो प्रधानमंत्री प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम that is scheme for solar PV modules मन रखो PLI production linked incentive this is also an important PLI schemes PLI production linked incentives and it is based to your solar PV modules photovoltaic cells basically it is linked to solar for PV cells photovoltaic cells मन रखो PV cells हैला solar photovoltaic cells please make a note of this solar photovoltaic cells right next
कौन अच्छे इतरे जदि हमें देखिबा मन देख सुनो जदि हमें देखिबा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी कौन करछि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव सर्विस रे production ministry of new and renewable energy that is the government of India is implementing the production linked PLI मन रख एटा परीक्षा रे पचारियो तुमको what is PLI हला ठीक अछि सब सेठी तमे कहि परिबोनी इकोनॉमिक्स रे प्राइम लेंडिंग इंटरेस्ट डोंट टेल दैट वन हला it is your production linked incentives regarding with your PV photovoltaic solar cells हला solar PV cells scheme under national program on high efficiency solar PV modules right for achieving domestic manufacturing capacity of gigawatt scale in high efficiency solar PV modules and solar PV cells with an outlay of पाखापाखी 24,000 कोटी टंका गवर्नमेंट एथरे इन्वेस्ट करछि आगु बढ़िबा हला वेरी इंपोर्टेंट एटा पीवी सेल्स अरे देखो बिना सेल रे गवर्नमेंट तो सब कला प्रोग्राम या पई सेपरेट काइन कला बर्तन तुम क्वेश्चन आछो सर एटा तो सेथरे हे पड़ता नो बिना जदि पीवी सेल्स रे ताले गवर्नमेंट प्रोडक्शन केमति करिवो आ एटा गोटे बहुत मैसिव एटा ही मेन मेकानिज्म जे कि तमरो एनर्जी प्रोड्यूस करियो सोलर एनर्जी को सो आ पई गवर्नमेंट separate चिंता कला माने through Ministry of New and Renewable Energy Sources with allocating the budget of 24,000 crore right this is a budget allocation right this is a budget allocation we can say again the scheme has provision for production linked incentives to the selected PV module manufacturers for 5 years note करो एठी केते for 5 वर्ष पाई for 5 years post commissioning on manufacture and sell high efficiency solar PV modules 5 वर्ष पे एटा तम परीक्षा रे पचारिबो हला ए जो PV मॉड्यूल जो मैन्युफैक्चरिंग दिया हबो केते एटा करिवो 10 वर्ष 8 वर्ष 9 वर्ष बट एठी तम मन रखा एक्चुअली हला 5 years this is for the 5 years तंग देबो पोस्ट कमिशनिंग on manufacture पे and sale of high efficiency solar PV modules जो अभी मैन्युफैक्चर मन को दिया हबो 5 वर्ष रो हला तांकू पीरियड दिया हबो पोस्ट कमिशनिंग द स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन two tranches data phase रो tranches रे फर्स्ट tranches रे कोन आउटले ऑफ पाखापाखी 4500 कोटी टंका अंडर which letters award has been issued काको particularly जो भी एजेंसी नबो काम करिवो हला has issued to 3 successful bidders for setting up पाखापाखी 8740 megawatt fulfilling integrated solar PV module manufacturing units next the second tranche रे कोन होची फर्स्ट tranche गला हला केते रहिला पाखापाखी 8740 megawatt right an outlay of kete puni 19,500 crore ru the scheme guidelines have been issued for 39 2022 jota hitra tender for solar PV manufacture tender on 1822 देखो ए सब जिंस तम खाली टिके क्विक रीडिंग करी के मन रखिया कबो कि दीटा फेज रे थिला प्रथम फेज रे एतिक पैसा सेकंड फेज रे एतिक पैसा आ बिडर माने को 5 वर्ष पई दियाला जो माने मैन्युफैक्चर और बिडर्स माने रहिबे राइट केतरे पचार दो काई हमें रिस्क नबा हला जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन नेक्स्ट solar photovoltaic module manufacturers are not required to report production hela they are not it is not required samane report kariya darkar nahi ministry of new renewable sources ko and therefore the data is not available energy ta mane kon independency again this is the power of being making independent hela independent parahap hela tanku diya hala bhai tum apna nije khud banao apne nije karo and you are responsible for own and of course penalty charges there. Next, however, the total capacity of farm manufactured solar photovoltaic modules in the country as per the approved model and manufacture is 22.4 gigawatt per annum. Eta gote question on rakho. Jodi hame dekhiba total capacity of manufacturing solar amar jo manufacture are sina solar photovoltaic cell manufacture hele sina production hobo tale kete rahibo seman ko jo target diya haichi kete per annum 22.4 megawatt sorry gigawatt 22.4 gigawatt mane 10 to the power 9 right gigawatt this is also a question right this is also a prelims question it is also help you out now come to the what is the objective of the scheme a scheme ra objective kon the scheme aims to build ecosystem for manufacturing of high efficiency solar PV modules hala photovoltaic cell PV mane photovoltaic cells modules in India and thus reduce the import dependence in the area of renewable energy
है import dependence in the area of renewable energy वर्तमान कौन हो ये बुझी रख इंडिया ये जो फोटोवोल्टिक सेल वर्तमान जदि आम मु 2 वर्ष 3 वर्ष तल कथा कह इंडिया मैक्सिमम फोटोवोल्टिक सेल इंपोर्ट करता कोटू चाइना हांगकांग है सिंगापुर चाइना हांगकांग मेन मेजोरिटी है प्रीवियस इन 2 to 3 years ago जदि आम देखा 2 to 3 years ago इंडिया imports majority maximum percentage of PV cells ठीक अच्छे from China Hong Kong maximum China Hong Kong also South Korea आम सब South Korea Japan maximum India import करता वर्तमान we are self sufficient है जदि बा import करूँ very less and that is what the India is transforming जोटा कि हम we have made commitment right again the objectives of this scheme include कौन मन रखो objective कौन रहिबो to build up solar PV manufacturing capacity high efficiency modules प्रथमे second to bring cutting edge technology for India manufacturing high efficiency right modules and will allow the technologies however the technology will yield better module performance be incentive जोटी जे न बुझी पड़छ यू कैन आस्क अगेन मु अगेन कहबी एई सब क्वेश्चंस गडा डेफिनेटली स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रे पुरे देबी आ मन को गोटे क्वेश्चंस रु पॉइंट मार्क में प्रीलिम्स आउट होछ ना बाबा वर्ष सारा रा मेहनत पड़े आमे माने निजरो प्रेजम्पशन अजम्पशन पाठ पढला बट व्हाट इज ट्रू दैट इज रिक्वायर्ड दैट हैज टू बी कल्टिवेट फॉर द एग्जाम्स राइट to promote and competitiveness जदि हमें देखिबा the setting of integrated plans for better quality control to develop an ecosystem for sourcing local material in solar manufacturing this will certainly boost employment generation definitely it will boost the employment generation and technological self sufficiency जदि efforts नबो definitely it will help you on technological and the employment generation and technological self sufficiency जदि इंडिया इस पैरामीटर हम फॉलो कर डेफिनेटली विल बी सेल्फ सफिशिएंट राइट नेक्स्ट इज इट क्लियर एवरीवन नेक्स्ट हमर आसो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 वर्तमान नुआ कांसेप्ट हैला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 और लास्ट दिटा रहिला आउडा पारे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर वर्तमान ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 1 जाइछि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 कोन अगेन गवर्नमेंट रे सब है ना एई सब क्वेश्चंस गुडा इन ईदर वे रे पके वर्तमान दिस इज अ न्यू कांसेप्ट हला न्यूली फेज 1 गन दिस इज अ न्यू emerging न्यू टॉपिक एनर्जी हला न्यू कांसेप्ट वर्तमान कोन हेछि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर वर्तमान जदि हम देखिबा हला ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर is a massive ongoing infrastructure this is a massive ongoing infrastructure initiative in India designed to synchronize and evacuate power generated from renewable energy source like your solar and wind with conventional national electricity grid it aims to support the nation's push toward integrating over 5,000 gigawatt of renewable energy capacity by 2030 सुधा है nation's push toward the integrating over 5,000 gigawatt of renewable energy capacity by 2030 मन रख केते एठी 5,000 gigawatt make a note of this national electricity grid बहुत बढ़िया कांसेप्ट है हैला पुनी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर देखिबा इट कंप्राइजेस बोथ कोन इतरे अछि टेक्निकलिटी कोन इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम जोटा कहजन ISTS एंड इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम्स माने इंटर स्टेट माने दीटा स्टेट भीतर इंट्रा स्टेट माने ठीक अछि ओनली से स्टेट भीतर मन रखो इंट्रा माने खाली से ओनली स्टेट भीतर इंटर माने दीटा स्टेट भीतर माने वन और मोर इंट्रा माने से स्टेट भीतर है system along with this setting of renewable energy managing center and the control infrastructure like your reactive compensation and storage system so वर्तमान गवर्नमेंट जो धीरे धीरे रिवैम्प करूची कौन सिस्टम रे
गवर्नमेंट रिवैम्प एटा कला खाली भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कल तो हबन ताकू तमे स्टोरेज करिवो डिस्ट्रीब्यूट करिवो विद इन द स्टेट एंड बियॉन्ड द स्टेट प्लीज मेक अ नोट after production of your energy what should the next step earlier we have no your robust infrastructure, we have not so developed infrastructure, but gradually or with the passage of time we have we have surpassed or overcome the bottlenecks. What are the bottlenecks? Storage ପାଇଁ ଆମର ନଥିଲା, ट्रांसमिशन ପାଇଁ ବି ଆମର ଅସୁବିଧା होतला, वर्तमान हाई एक्सटेंशन हाई टेंशन हमर ग्रिड लाइन्स रहलानी पावर ट्रांसफर करिया पे। अच्छा स्टोरेज रहइबो डिस्ट्रीब्यूट कोठी करिवो इंटर स्टेट माने स्टेट रु आगु को जीवो है ना विद इन स्टेट्स भीतर गोटे स्टेट रु मोर आउ जेमति ओडिसा रो द्वारा पावर प्रोडक्शन होला हमें वेस्ट बंगाल को देले कि मध्य प्रदेश को देले कि हमें छत्तीसगढ़ को देले आउ कोन हो निज ओडिसा भीतर। सो दैट वाज द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2. This is your phase 2 I am talking about, that what the government has envisaged कौन आगु को लक्ष्य करछ आगु बढ़िबा। दिस इज वेरी फंडामेंटल। द इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम जदि देखिबा हला जोटा कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन 7 स्टेट। प्रथम कोठु आरंभ होला 7टा स्टेट रे, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस 7 स्टेट्स GC2 ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 प्रथम 7टा स्टेट रे की आछि। फर्स्ट दे आर नेमली गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, केरला, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। यही 7टा स्टेट रे प्रथम कोन हला जीसी फेज 2 से माने इंप्लीमेंट करले हला। दिस इज कोन लेली इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम स्कीम इज बीइंग प्रथम इंप्लीमेंटेड हला। द स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय रेस्पेक्टिव स्टेट्स हला। कोन हबो तांकर निजर भी रेस्पेक्टिव स्टेट डिपार्टमेंट जोटा अछि रेस्पेक्टिव स्टेट योर ट्रांसमिशन यूटिलिटीज black letter mu kar deji bold letter kar deji that will help you out to make a note of this, right? The scheme is for setting up basically setting of approximate pakha pakhi kete 10700 hela cable kilometer mane bhabo kete cable c mane edi cable मन रख this c means cable जो wire टणा हबो 10750 किलोमीटर केबल ट्रांसमिशन लाइंस and 27500 किलोमीटर हला 500 your MVA माने वोल्टेज ठीक अछि वोल्टेज एम्पियर हला मिलियन वोल्टेज एम्पियर सबस्टेशंस पाखा पाखी सबस्टेशंस रहइबो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट इंटीग्रेशन अप्रोक्सीमेट 20 गीगावाट नेशनल हला 20 गीगावाट जदि हम देखिबा 20 गीगावाट रिन्यूएबल योर एनर्जी कैपेसिटी जनरेशन कैपेसिटी। सो 20 गीगावाट जनरेशन कैपेसिटी पे हम कोन दरकार एडी मन रखो एटा लिखिनियो। दिस इज आल्सो एन क्वेश्चन 10750 केबल किलोमीटर लाइन माने वायर लाइन जो टणा हबो बड़ बड़ लाइन जो टणा हबो हला ट्रांसमिशन लाइन सेटा कोन कहजो ट्रांसमिशन। तमे देखियो बड़ बड़ सब एमती बड़ बड़ सब ट्रांसमिशन एते बड़ बड़ सब ट्रांसमिशन लाइन रहे ना ऊपर तमे देखियो बड़ बड़ सब टावर सब रहे हेला ए सब बड़ बड़ टावर रहे कि नै एमती टावर रहितो तमे देखियो रास्ता रे गला बळे हला एनएच साइड रे ए सब टावर लाइन सब रहितो कनेक्शन ए सब टावर लाइन सब रहितो। दिस इज these are nothing but ट्रांसमिशन लाइन्स मन रख तमरो जणिया पे ट्रांसमिशन लाइन्स दीज आर केबल लाइन्स हला ट्रांसमिशन केबल ट्रांसमिशन लाइन लिख देली केबल ट्रांसमिशन लाइन्स हला। दिस इज अ टावर हला दीज आर टावर 1 टावर 2 टावर 3 दीज आर द थिंग्स। एट तमे विजुअलाइज करो हाउ गवर्नमेंट इज पुटिंग एफर्ट्स बेस्ट एफर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? पुनी आगु बढ़िबा। Again, this project, the total project cost is pakapaki 12,000 hela 12,031 crore pakapaki near about 12,031 crore with funding mechanism that consists of 33%. या भितर पुनी कोन केमती हेछि 33% सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस pakapaki 33% सेंट्रल गवर्नमेंट करिवो फाइनेंस फ्रॉम कोटू Ministry of New Renewable Energy and that is for near about your 3,970 crore hela and balance of 67 to arrange to STU। मु आज भी कहि दोछि जो माने काली UPSC दोउछो definitely it will help you out। मु लिखि दोछु definitely question आसो 100% because these are the very emerging topic, right? And 67% by the state। तो हमने कौन जानले joint? So basically हमें कौन जानले this is a joint venture JB माने joint venture मु लिखली। This is a joint venture project where the central government or the government of India केते रहइबो stake रहइबो 33% financial for the central government
है सेंट्रल गवर्नमेंट है एंड रिमेनिंग 67% that is your financial, that is your state government. मन रख एटा पर पचाले कोन हो तुमको क्वेश्चन केमती दे देथिबे regarding the finance distribution, regarding the finance distribution I am talking about finance distributions एटा मने से माने कोन दे देथिबे बेले क्वेश्चन टा को उल्टा पकई देथिबे 67% हला सेंट्रल गवर्नमेंट आ बाकी 33 ला स्टेट गवर्नमेंट नो एटी कौन रहा 33% रहा सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा फाइनेंशियल असिस्टेंस दबो और बाकी रिमेनिंग विद 67% विद द रेस्पेक्टिव स्टेट्स दिस हैज टू बी मेक इट क्लियर प्लीज मेक ए नोट ऑफ दिस राइट सो द बैलेंस 67% जो फंड जो रहबा अवेल लोन्स फ्रॉम तार भी सुविधा दिया जदी स्टेट गवर्नमेंट पाकर पैसा नहीं जब फॉर एग्जांपल से आई एम सेइंग झारखंड इज नाउ स्ट्रगलिंग Uttarakhand is now struggling, Himachal Pradesh is now struggling because of the natural calamities Himachal Pradesh and Uttarakhand that they have confronted in the last year. Let's say, right? Someone could loan नहीं परी पे IREDA, REC, PFC, KFW. These are the government departments, loan providing departments that they can this respective state governments. Okay, they can take loans. है So this is all about next point देखिए the green energy corridor is a critical transmission infrastructure transmission lines critical transmission infrastructure project. It is designed to evacuate कौन होगा designed to evacuate more than 6 gigawatt of solar है evacuates more than 6 gigawatt solar and wind power. Can you imagine कितने बढ़िया प्रोजेक्ट है पाखा पाखी 6 gigawatt गवर्नमेंट ट्रांसमिशन लाइंस जो तुम पढ़ी लो एटी है ना ट्रांसमिशन एटी तुम देखो टू बी वेरी क्लियर दिस आर द विंड्स सोलर और विंड दीटांग अछि राइट सो गवर्नमेंट कौन कला कि 6 gigawatt solar and wind मन रखो solar and wind power the power is transmitted from renewable rich districts basically renewable rich districts किए renewable rich wind power हमें जानि solar और wind रे वर्तमान राजस्थान गुजरात अहेड करछंती and of course Rajasthan is Gujarat because of the presence of the third desert किए जैसलमेर बारमर जोधपुर हैला बाइसल 800 मन रखो एटा हैला जैसलमेर बारमर जोधपुर बीकानेर अजमेर नागौर एंड चित्तौड़गढ़ टू द नेशनल ग्रिड एमाने कोन करिवे नीचे प्रोडक्शन करी कि एमाने ग्रिड लाइन कनेक्ट करी कोठी मेन ग्रिड नेशनल ग्रिड संगे त माने फॉर एग्जांपल एटी जो एमाने लेट्स से स्टेट ग्रिड कोन करिवो एमाने कनेक्ट करिवे ए पावर तंकर निजर लेकी कोठी नेशनल ग्रिड संगे से माने कनेक्ट करिवे दिस इज द नेशनल ग्रिड लेट्स से हैला दिस इज द नेशनल ग्रिड जोटा कि मेन ग्रिड मन रखो तो स्टेट गवर्नमेंट धर एटा टावर ग्रिड 1 हला सपोज टावर ग्रिड ओडिशा इट इज ओडिशा एटा रहला सपोज झारखंड एटा रहला धर वेस्ट बंगाल ए माने तांकर प्रोड्यूस करले हला ओडिशा टीम लिखली ए माने समस्त कनेक्ट करले का संगे आकु कनेक्ट करले नेशनल ग्रिड को आकु कनेक्ट करले नेशनल ग्रिड को सो एटू कोन हला एटू करी कि पूरी से माने एटी ट्रांसमिट हो अदर स्टेट्स को दैट इज व्हाट द गवर्नमेंट ऑफ ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 एम्ड स्टेट्स माने इंटीग्रेट करिवे नेशनल ग्रिड संगे आउ पावर ट्रांसमिशन हो कोन भाबो जदी को स्टेट रे डेफिसिट अछि से ए स्टेट रो तक प्रोवाइड करा जिवो से टू परचेज करि परिबो गवर्नमेंट प्रोवाइड करि परिबो दैट इज व्हाट द इंटीग्रेटाइज मेकानिज्म इन शेयरिंग द पावर दिस इज ऑल अबाउट राइट ठीक अछि बुझी हला इज इट क्लियर टू एवरीवन लास्ट हला बायो एनर्जी बढ़िया कांसेप्ट है बायो एनर्जी कांसेप्ट लास्ट एटा बुझियला समस्त को दिस कांसेप्ट है आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन लास्ट देखिबा बायो एनर्जी जस्ट अ मिनट आई सेकंड सिप ऑफ वाटर राइट बुझी होजरे पिला माने बायो एनर्जी देखिबा कोन गवर्नमेंट रे पुनी अगेन दिस इज एन ओके what are the new incorporation एटी कोन लिखली what are the this is the last है ना what are the new incorporation कोन देखिबा बायो एनर्जी रे नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम जदि हम देखिबा द नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम इज एन फ्लैगशिप इनिशिएटिव है ना फ्लैगशिप इनिशिएटिव by the Ministry of New Renewable Energy है ना न्यू रिन्यूएबल एनर्जी बजट आउटले पाखापाखी है ना
पाखापाखी 1715 कोटी टंका 1715 crore. The program promotes conversion of your conversion कौन surplus biomass cattle है surplus biomass cattle dung माने गाई गोबर है surplus biomass जति होची है bio energy कौन कौन रहबो biomass रहबो then cattle dung रहबो and urban industrial bio waste into clean energy, right, into clean energy, creating rural employment and supplement income for farmers है supplement income आ गोटे rural employment. So biomass energy program government जोटा एटा rural sector पे बहुत important. This is ना very important for your rural economy है rural sector और rural economy पे very important वर्तमान कौन job creations पे आगु देखिबा this program has a vision of central financial assistance है कौन रहइबो central financial assistance CFA for various components related to power generation related to your power generation biogas then biogas generation and your briquette pellet manufacturing एटा को कहा पई रहइबो pellet manufacturing माने छोटो छोटो बल्ब जो दा पई also भी biogas गवर्नमेंट कहा को एनर्जी टा कहा को इंटीग्रेट करिवो कहा को प्रोवाइड करिवो where the biomass is one of the major feedstock material which primarily shall be sourced from rural areas source from rural areas मन रखो से जो मु कहली rural sector पे very much important. This is for your rural economy or rural sector पे this is very important bioenergy. Again the national bioenergy program shall not only promote eta kebol kone shall only promote the utilization of surplus biomass but also provide additional source of income for rural households. जदि एटा देखियो कि खाली एटा एथि करनी also additional source of income for the rural households ପାଇଁ भी बहुत बड़ गोटे एटा प्रोग्राम अछि rural households ପାଇଁ right. पुणी आगु देखियो डिटेल रे the national bioenergy program जोटा अछि that is supports setting of bioenergy projects in the country under the तीनटा major category मन रखो bioenergy consist करछि तीनटा major category. प्रथम एटा सब important कौन कौन waste energy program biomass program and biogas program one by one discuss करिबा shortly. प्रथम कौन है सो हम टोटल जानले ई जो बायो एनर्जी प्रोग्राम नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम जो तुम देखुछो नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम एटा तीनटा भाग रे एटा हैछि. It has got 3 branches right 3 branches गोटे हला waste energy right one is your waste energy then second one is your हला biomass then third one is your biogas right. So तीनटा main रे बायो एनर्जी जो नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम has divided segregated into 3 parts